भाई आपने खुश रहना है, आपने ज्यादा जीना है, आपने सेहतमंद रहना है। When you ignore any thought, वही आ रही होती है बार बार। ठीक है वो पैसे अच्छे कमा रहा है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो देखिए कितनी ज्यादा है जो उसको रात को सोने नहीं दे रही है। बहुत सारे लोग तो शायद इस बारे में सोचते भी नहीं, इवन कोई क्वेश्चन कर ले तो हम फंस जाते हैं कि पर्पस है क्या हमारी लाइफ का। कि व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ अ फुलफिल्ड लाइफ, व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज राही बट वेलकम टू अनबॉक्सिंग सक्सेस। आज मेरे को-होस्ट हैं यासिर जलबानी। Faria Syed. Today we have Dr. Tamazur with us. Dr. Tamazur, thank you so much for joining us today. Dr. Tamazur will tell us about how to deal with the chaos of the regular world as she is the CEO of the Calm Planet. Most of us feel anxious, depressed, sad, or worried. And she is someone who helps us deal with those feelings. Dr. Tamazur, tell us how you help out. Thank you for having me, Raheel, Yasir, and Faria. Thank you for having me here. Well, I'm a health psychologist, and health psychology primarily deals with people. It's a branch of clinical psychology, and it primarily deals with depression and anxiety and mental illnesses of those people who are already suffering from a chronic illness. It could be an autoimmune condition, it could be cancer, or anything like that. But since it's a sub branch of clinical psychology, I also get a lot of people who are not suffering from chronic illnesses, and they're just stressed because of multiple issues and including work stress. Recently, I've started working in employee well-being as well because I have been in the business of manipulating lifestyles to people's benefit. So I'm working in employee wellness, and what we're doing with different corporate is that we are trying to change their behaviors in order for them to live a healthy life. So basically, you're training employees in corporate world, right? So what are the challenges you are facing now? जो बिहेवियरल चेंज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड देर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन्वॉल्व देयर व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉय वेलबींग। सो यूजुअली हम कलेक्टिवली लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है। सो अगर हम 300 लोगों के ऊपर 350 400 लोगों के ऊपर कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, सो इट पोजेस विद डिफरेंट challenges, and that might include क्योंकि everyone has different variables of with different variables that motivate, Mindset. yeah, Yeah. and different factors that actually motivate them. So इंडिविजुअल लेवल पे काम करना आसान है, कलेक्टिवली बिहेवियरल चेंज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इंडिविजुअल फैक्टर्स को हम इग्नोर करके कलेक्टिव पॉलिसीज बना रहे हैं। बट देन अगैन आई थिंक जो डेटा है वो हमें प्रूव करता है कि बिफोर द इंटरवेंशन और आफ्टर द इंटरवेंशन लोगों के बिहेवियर में कितना चेंज आया। एंड अभी तक मैंने जितना काम किया, द डेटा आई हैव कलेक्टेड, आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम एबल टू शो the HR heads that this is what we have done and these are the behavioral changes that we have incorporated. तो यहाँ तक पहुँचने से पहले जो जर्नी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट हैव यू गॉन थ्रू, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर इनिशियली, आपने डॉक्टरी की और उसके बाद आपने कहा कि नहीं अब मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी। तो हाउ डिड दैट शिफ्ट केम अबाउट एंड उससे पहले आप क्या कर रही थी, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। Yeah, so I was studying medicine and then I was doing house job. There were certain things that used to bother me about the medical system. ये कि अगर patient hypertension के साथ आ रहा है, heart attack के साथ आ रहा है, MI, stroke के साथ आ रहा है, even cancer के साथ आ रहा है, हम जो है वो बहुत superficially उसको treat कर रहे हैं. No one is holding their hand or asking them what's going on in their life, what was their lifestyle up to this point, what led them to be here at this point in their life. So that made me think, and there were several patients that I can now, you're saying that तो मुझे flashbacks आ रहे हैं. There were several patients that led me to here. उसमें मुझे आई रिमेंबर अ ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट, एंड वो थ्रू आउट डोमेस्टिक वायलेंस में रही थी और नाउ शी हैड ब्रेस्ट कैंसर. और जब हम उनसे बात कर रहे थे, उनकी हिस्ट्री ले रहे थे ना, लाइक हम इतनी सुपरफिशियल हिस्ट्री ले रहे हैं. नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द ट्रॉमा दैट शी हैज़ एंड्योर्ड ऑल हर लाइफ. और उनको ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा मेटास्टेसाइज भी इसीलिए हो गया था बिकॉज हर हस्बैंड वाजंट अलाउइंग हर टू सी अ डॉक्टर. It was like there's such a huge game of mind here, but no one is interested in that. So I think that led me to the question कि यार how to live a healthy life
And then when this question arises, definitely the question arises that how to live a fulfilled life. And when that question arises, I automatically was in psychology before I know it. And I was like, this maybe I should do a master's in psychology rather than going in the traditional residency and psychiatry. I think I wanted to know what's happening behind these physical symptoms. What's the story? So you wanted to help the people basically, or you wanted to know the or to improve people's mental health, something like that. Yeah, definitely. I wanted to improve people's quality of life. Yeah. And I really wanted to crack the code of healthy living. Like, what is it? Because, an 80-year-old guy, I was working in the US, I was doing an internship in the US in Connecticut. And I remember an 80-year-old coming, and he was so fit, and he was like, guess my age, young girl, guess my age. And I was like, I don't know, maybe 60. And he said he's 80 years old. Um, and I was stunned because 80 years old in Pakistan, unfortunately, do not look like the way he did. Okay. Okay. Um, and I really wanted to crack the code. Like, what's the code for healthy living? Secret physical Yeah, youth. definitely. Yeah. Yeah, and it's also called successful aging. Like, what's the code? Like, so I think, and now I know by research, like, what are the codes and how do you do it? I think a lot of even healthcare workers do not know that. So basically biological age and then तो your क्या mental age. पता लगा, कुछ बताया अभी maybe? आपने कहा सक्सेसफुल एजिंग, तो Yeah. आपके हिसाब से सक्सेसफुल एजिंग, सक्सेसफुल लिविंग, what would you say? Okay, what are steps for that? Oh my God, there's so many steps involved. Obviously, knowing your definitions first. Okay, what's your definition of a fulfilled life? What's your definition of success? Definitely knowing that first. And that I do with people. Like, I help them reach to the point where they can define their own success. They can define their own definition. They can define fulfillment in their own words. And then फ्रॉम देयर द जर्नी कैरीज ऑन. बट ऑब्वियसली अगर ऊपर ऊपर से बात करें हेल्दी लिविंग की, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है सही है. कि नो हाँ, स्मोकिंग सही है, एंड नो सही है. ड्रिंकिंग, Yeah, exercising, exercising, yeah. and Eat healthy food. eat healthy food, Yeah. having great social support, having great relationships around you. And if you don't have, and you have to Yeah. work for great relationships around you. So these are definitely the key points. But then again, और भी है इसके अंदर, कि पर्पस क्या है आपका लाइफ का, आप डिफाइन कैसे करते हैं उस पर्पस को. So बहुत सारे लोग तो शायद इस बारे में सोचते भी नहीं. इवन कोई क्वेश्चन कर ले तो हम फंस जाते हैं कि पर्पस है क्या हमारी लाइफ का. लाइक फॉर इंस्टेंस आई रिमेंबर आस्किंग समबडी, मैंने कहा तुम इतना बड़ा बिजनेस करोगे, मैंने कहा तुम करना क्या चाहते हो, मतलब तुमने पास पैसे भी हैं, तुम्हारे पास ये भी, तुम्हारे पास सारा कुछ है. बोला यार ये तो नहीं सोचा मैंने कभी, बिकॉज आई गॉट इनटू बिजनेस, मैं बिजनेस करता रहा हूँ. तो अब मैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन. तो हाउ डू पीपल आंसर जब व्हेन यू आस्क देम दिस, क्या सरप्राइज क्या मिलता? So I think a lot of people who come to me, they want to know. So they want to investigate that, and the journey starts there. Like, आपका क्या गोल है लाइफ का, आप क्या पर्पस देखते हैं, आप करना क्या चाहते हैं जिंदगी में. अच्छा, आप ये करना चाहते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, क्यों क्यों बनना चाहते हैं बिजनेसमैन? व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस? एंड आई टेल यू कि जितनी वो रीजंस कॉन्क्रीट होती हैं, उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं, लाइक्लीहुड है कि पर्सन वो अचीव कर लेगा. ठीक है. और बड़ी इंटरेस्टिंग है. अब इसके अंदर तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा डीप टॉपिक है. वो ये कि अगर आपकी जो सक्सेस है, एंड नाउ दिस इज रिसर्च बेस्ड, दिस इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग दैट बिकॉज आई वांट यू गाइस टू Think I'm फील smart. गुड. फील गुड, नो, आई मैं फील गुड नहीं Yeah. करा रही हूँ, लेकिन दिस इज रिसर्च दैट if your ambitions and goals are tied to something really productive, like making people's quality of life better, if it's really tied to that, then the chances are greater that you're going to actually do it, and you're going to actually live a fulfilled life as well. I would really recommend, agar aap log bhi, if you can, Kelly McGonigal, स्टैमफोर्ड की एक प्रोफेसर है, उनकी एक टेड टॉक है, हाउ टू परसीव स्ट्रेस और परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, कुछ इस किस्म का नाम है. प्लीज गो एंड लिसन टू दैट. एंड शी टॉक्स अबाउट दिस कि हाउ working with other humans and making other people's life is actually tied to longevity and better health. So this is a very deep topic. Yeah, what makes you healthy? It is obviously personal as well,
पर्सनल के अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी हैं कि आप अपनी फुलफिलमेंट किन-किन चीज़ों से ड्राइव कर रहे हैं, वो रीज़न्स कितनी So कॉन्क्रीट you है। are the director of your life, या basically. Okay, so something that we took off the internet, ठीक है, and something that is your quote. So I'll repeat that, and I would want you to tell us what does it mean. So everyone has a shadow self. We all need to accept our own inner darkness. What does that mean to you? Well, it means that, everyone has their own demons. Everyone has negative thoughts. Everyone has their shadow self is specifically, it's a Freudian term. And it means that everyone has a good side and a bad. I don't want to say bad, but everyone has a bad side. Okay? And it has all the basic instincts as well and all that. And I think obviously to acknowledge that there's a shadow self, there will be some negativity that would creep in my life. I'll think negative at certain points in my life. I will get angry. I will maybe mess up, but to acknowledge that, obviously, I'm a human being, that self exists, but I have to work towards evolution. I have to work towards evolving myself to the point where my shadow self is a shadow only. It's not the dominant feature. And you can control it. You can first to accept करें पहले कि कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि sometimes हम खुद सेल्फ डाउट में आते हैं कि यार हम इतना नेगेटिव सोच रहे हैं कि आर वी बैड पीपल या हम में कोई बुराई है. वो इट्स नॉट दैट. आई मीन एवरीबडी को वही सर्कमस्टांसेस पे कि व्हाटएवर यू हैव सीन, व्हाटएवर यू हैव गॉन थ्रू, उसकी वजह से मे बी देयर आर थिंग्स दैट आर नेगेटिव इनसाइड यू. बट देन अगेन वही बात है, you want to learn कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ. And I think this is where psychology comes in. I love Andy, who makes you meditate in Headspace. So he says that thoughts are like cars on a highway. You don't jump into every car on the highway. You just see it like passing through, and there are negatives and positives. And you don't attach yourself to every thought. I think that's very important. You don't attach yourself. And when you ignore any thought, वही आ रही होती है बार बार. That's so वही true. बार बार हाँ. आएगी, वही वही लाल बार गाड़ी बार बार नजर आती है. बार बार वही चीज नजर आएगी. Definitely. Red car का तो वो तो खैर है ही ना. But like the reality. Yeah. And I think that this happens to us so much. It happens to me, and I'm like, I know it's just a bad thought. Let it go. Let it pass. Let it pass. And अब फिर उसी में मतलब अटक के रह जाते हैं ना. So what would your advice be जब आप अटक के overthinking करते हैं and the bad thought is like just you become obsessed with it. So how do you get out of that obsession? देखो, there has to be certain थॉट के पीछे ना कुछ मज़ीद साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम रियली, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, आई एम रियली नर्वस अबाउट दिस पॉडकास्ट. ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि यार आई वाज सो नर्वस, आई वाज गेटिंग अप, मैं आई एम थिंकिंग अगैन आई एम गोना रेक दिस पॉडकास्ट. ठीक है, सो व्हाई एम आई थिंकिंग दैट? लेट्स backtrack it. ठीक है, okay, there's definitely fear of failure, but how many times this fear of failure have emerged in my life? Is this like a constant thing? Like, am I, so it has to come down to a certain point, like maybe it's fear of failure. Okay, so that is the thing that now I have to correct. Okay, I have fear of failure. Then you accept it. You're like, okay, I have this fear, this is my fear. If and that's okay, I'm a human being, I am allowed to have fears. So what I can do is I can have this fear, but at the same time try to believe that, try to not let that fear overpower me. I'll still do my best, and I'll hope for the best कि I won't fail. Okay, and I'll try my best not to fail. But then this fear, okay, that's all right. It can stay there. I'm a human being. I'm allowed to have. And it's not going to kill you. So I'm gonna kill me. I mean, it's So not the end of the world. हाँ, तो आप talk down करें basically. Also, I think सो one जाओ thing, यार, चिल करो. कोई देखा जाएगा जब Best advice. I think एक और चीज always Chill helps कर. when I have anxiety of doing something या कोई ऐसा. तो अगर आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, like even if my team comes up to me and like यार हमारी मीटिंग हम क्या, तो मैंने कहा prepare. अगर आप प्रिपेयर कर लें उस चीज के लिए, इफ यू वर्क हार्ड टुवर्ड्स डूइंग जो आप करने वाले हैं, उसके बाद लाइक आफ्टर अ सर्टेन वाइल, लाइक कभी कभार हम भी, लाइक द फर्स्ट टाइम आई डिड द पॉडकास्ट, आई वाज मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा कल ये वो, एंड देन रात को मैं बैठा था, मैंने कहा यार इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, आई हैव डन माय बेस्ट, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड इट लाइक ठीक है, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, बट देन अगेन वही बात है, इफ यू प्रिपेयर तो आधी एंग्जाइटी कम हो जाती है, आधी फिर भी रहेगी. ऑब्वियसली यू ह्यूमन, आप कोई भी चीज करने जब जाते हैं थोड़ा बहुत तो फील होता है. इवन विद प्रोफेशनल्स हु डू इट एवरी डे, दे ऑल्सो हैव, वो उनकी एंग्जाइटी का टाइम मे बी 10 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, बट होता तो जरूर है. तो अच्छा, ये प्रोफेशनल से बताएं, आप जो कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग करती हैं, और उसमें क्या मतलब कोई ऐसे आता है कोई अपनी प्रॉब्लम बताता हो
कि मुझे ये कोई मुझे इशू ये है। पसंद है, मैं क्या करूं, लाइक ये भी एक बड़ा मसला है कि इन वर्क प्लेसेस ये तो कहीं और निकल गया, लेकिन I'm just saying because this is one of the ये मतलब ऑफिस में ये होता है ना कि अजीब कोई आपको ट्रेनिंग में क्या होता है, बेसिकली क्या मटेरियल होता है, और लोग क्या मतलब ऐसे लोग होते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं, या Obviously. जब आप तो वो कैसे Like, क्वेश्चंस that's my करते हैं job. आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो ट्रेनिंग कंटेंट क्या है, मतलब आप कैसे उनको ट्रेन Yeah, कर रहे sure. हो? So, but can I add a little to that conversation as well? जो अभी श्योर हम श्योर कह रहे श्योर थे श्योर। वो ये कि you know when Rahil talked about कि preparation, that's a great coping skill. That's a great coping skill. But the problem is that people when they are facing anxiety, they don't get to the point of acknowledging. वो एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हैं कि दिस एंजाइटी इज स्टेमिंग फ्रॉम माय पर्सनल इनसिक्योरिटी एंड दिस इज द इनसिक्योरिटी एंड दिस इज द फियर. सो वो एंड आई टेल यू देयर आर लॉट मेनी पीपल, दे आर वेरी एजुकेटेड बट दे जस्ट कैन नॉट ब्रेक इट डाउन टू दैट पॉइंट कि ये एक्चुअली ये वाली इनसिक्योरिटी है या ये वाला कॉम्प्लेक्स है. मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया, वहां पे कोई 300 लोग थे सामने, और मैंने या कभी फेस नहीं किया था, तो रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी कि यार मैं सुबह क्या, मतलब कल जो है वो 300 लोगों को फेस करना है स्टेज पे, मैं कैसे क्या करूंगा वहां पे। तो अब वी वर बैंड, हम परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, तो वो परफॉर्म करते करते जब मैंने देखा ना, तो मुझे वो ब्लैक आउट हो गया, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, मतलब ये नहीं वाओ. था कि मुझे कोई चक्कर आ गए, बट आई वाज ब्लैक आउट बिल्कुल, और कोई स्टेज पे लाइट्स भी चल रही थी और नजर नहीं आ रहा था कुछ भी, एंड आई स्टार्टेड अ रॉन्ग सॉन्ग। सही है ना? तो वो एक फियर था अंदर, जो ये बात कर रहे हो, इस तरह होता है, इस तरह। तो बट जो बैंड मेंबर्स थे, दे स्टार्टेड प्लेइंग द दैट the other सॉन्ग। song. नहीं नहीं, वही सॉन्ग जो जो हमारा फिफ्थ सॉन्ग था, वो मैं पहले प्ले करना शुरू कर दिया मैंने, और वो उन्होंने प्ले भी करना शुरू कर दिया। वो हमें इस सबको लोगों को इस तरह लगा कि ये मतलब दैट वाज डिसाइडेड, यही डिसाइडेड था, एंड एवरीवन वाज क्लैपिंग, और उसके बाद मेरा विजन वापस आ गया। You had a supportive team and see how Yeah, social support yeah, really yeah, helps us. yeah. Acha, coming back to your question about corporate के अंदर, so the thing is that see there are mental illnesses and then there are mental disorders and then there are personality disorders as well. So जब हमारे mental disorders हैं उसके अंदर हमारे anxiety, depression वगैरह हैं और ये सब treatable भी हैं, preventable भी हैं. जब हम personality disorders के बारे में बात करते हैं तो personality disorders जो है वो इधर जेनेटिक भी हैं, इन्वायरमेंटल भी हैं, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत इस मामले में कॉम्प्लिकेटेड हैं. एक तो वो डायग्नोज बड़ी मुश्किल से होते हैं. दूसरी चीज़ ये कि यहाँ फिर हमारी वो वाली जो साइकोलॉजी है ना कि इट्स रियली इन योर हैंड एंड यू कैन रियली चेंज टर्न योर लाइफ अराउंड, बट पीपल हु हैव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स दे रियली डू नीड हेल्प, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंटल या जेनेटिक कॉजेज हैं उसके अंदर उनकी पर्सनालिटी हैज़ बिन स्ट्रक्चर्ड इन अ पर्टिकुलर वे. ऑब्वियसली दे हैव सर्टन कंट्रोल ओवर देयर थॉट्स एंड दे कैन चेंज हाउ दे थिंक, बट देर आर सर्टन बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं जिसमें आपकी जो मीडिया बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करता है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है. लाइक दीज पीपल आर इनकेपेबल ऑफ एम्पथाइजिंग. Like they cannot empathize no matter how much you try to make them. You can just try to see them from a rational point of view, but they wouldn't be able to empathize. और भी बहुत सारे personality disorders हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. और क्या कॉर्पोरेट में ऐसे लोगों को नहीं होगा? हो गए, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल होते हैं. वी अगर इफ़ आई फील इट तो आई डू नॉट हेजिटेट इन सेइंग कि यू माइट वांट टू डू, यू माइट एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम सम हेल्प इन इंडिविजुअल सेशंस इफ आई सी ओके, इट. या सो आपका एक कोई ट्रेनिंग कोई मॉड्यूल होता है उसमें, कि वो आपको सेम रहता है हर जगह पर? No, no, it totally depends. It totally depends on what the corporate wants to have as well. उनके goals क्या हैं, उसको उन goals के साथ align करना पड़ता है. तो it definitely keeps on changing. अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि शी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट थेरेपी, मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऑब्वियसली वी डू अग्री समवेयर. Yeah. बट लाइक यू सेड के एवरीबody शुड. I think that everybody should try therapy at least once. I think, especially people. नो हार्म, आई थिंक. Exactly. No harm, especially consider if you've crossed a certain age. Because when we're younger, we have a best friend. We tell all our secrets to. If you're someone like me, तो मैं हमेशा अपनी डायरी में अपनी secrets लिखती थी. मैं अपनी अम्मी को अपनी secrets बता देती थी. But you cross a certain age, हम वो उसी तरह से open नहीं होते, उसी तरह से vulnerable नहीं होते. तो if you go to a therapist, then I feel like the goal is to release
that vulnerability. So I think that it's a good practice. So that I think is a very good बट वही फिर हम process. ये डिस्कस कर रहे थे कि कि क्योंकि हर थेरेपिस्ट इज नॉट लाइक देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ Yeah, थेरेपिस्ट, I और अगर आपको 100% agree अच्छा with that. थेरेपिस्ट नहीं मिलता तो दे एक्चुअली prey on your insecurities and your anxieties and then because they have to see कि कितने सेशंस मेरे होंगे और कितने पैसे बन जाएंगे, ये बहुत एक obviously it's a commercial business also for a lot of people rather than ठीक है हेल्प एक सर्टेन लेवल की है, बट लाइक आई नो पीपल जिनको फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पहले दिन बोला कि आप एक कलरिंग बुक खरीदें और मार्कर्स लेके आएँ और कलरिंग करना शुरू कर दें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई चीज़ होगी। फिर अगले दिन आई मेट दिस पर्सन एंड शी हैड लाइक डार्क सर्कल्स और पूरी रात में रोती रही। मैं क्या हुआ बिकॉज मैंने अपनी उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे अब्बा के बारे में एंड हाउ ही डाइड एंड ये और वो और पूरी की पूरी मैंने लाइफ स्टोरी दोबारा से रीलिव की जो मैं शायद भूल चुकी थी, एंड मेरी एंग्जाइटी भी वो नहीं थी या मेरा प्रॉब्लम भी शायद वो नहीं था, बट नाउ आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। सो आई वाज लाइक कि मे बी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना मैनिपुलेट कर रहे होते हैं आपकी इनसिक्योरिटीज़ को या आपके प्रॉब्लम्स को, एंड देन जस्ट टू मेक मनी ऑफ इट। एंड जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया कि आई ओनली गॉन वंस टू अ थेरेपिस्ट एंड उन्होंने मुझे आधे घंटे पौने घंटे का सेशन था, एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक, मैंने उनसे पूछा भाई मैं नेक्स्ट टाइम कब आऊँ, तो उन्होंने बोला अब नहीं आने की जरूरत। मैंने कहा भाई तो फिर मतलब I थेरेपी mean, है ये it's a तो। very personal. हाँ, नो आई एम जस्ट सेइंग कि तंग आ गए होंगे। इससे दोबारा नहीं मिलना। Like बस राहिल बहुत हो गया. भाई भाई प्लीज मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ेगी इसके बाद। आप बताएं मैं कब आऊंगा। He's like, I need my own appointment, okay? बट द पॉइंट वाज कि ही वाज लाइक कि मैंने आपको 4 चीजें बता दी हैं, अगर आप वो ये कर लेंगे तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड मी एनी मोर। तो आई थॉट कि यार इसका उस दिन मुझे हुआ कि नहीं यार अच्छे थेरेपिस्ट भी हैं, ऐसे Yeah. लोग भी हैं जो कि दे फील लाइक यार आपके पास इतना कंट्रोल है, या दे रीड यू इन अ वे एंड देन दे टेल यू कि भाई, एंड देन ही एम्पावर्ड मी। मुझे ये फील हुआ कि उसने मुझे एम्पावर किया कि यार ये तुम Yeah, कर सकते हो, एंड that's यू डोंट नीड एनीबडी एल्स, यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। तो नहीं तो बहुत सारे मुझे लगता है कि लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, हर थर्सडे का वेट कर रहे हैं, वो सब कुछ बॉटल अप किया हुआ है कि थर्सडे आएगा एंड आई विल ब्लैबर एवरीथिंग, एंड देन फिर मैं एक हफ्ता इंतजार करूंगा कि इंतजार करूंगी और अपने आप को मिजरेबल रखूंगी। तो आई मीन दैट इज वन वे। आप बताएं, आई मीन हैव यू गॉन टू थेरेपी बिफोर? नहीं, आप ये Yeah, बताएं yeah. Real आपने कभी question. ऐसा किया है कि भाई तू जा तू Yeah, I think I would not answer. करियर खराब करोगे उनका। But the thing is, so I have a few points to add here. ये कि you said हाँ जो थेरेपिस्ट जो सबसे ज़्यादा देखिए पैसों का तो आई डोंट नो, ये तो खैर कोई भी चोरी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम दिखाई देता है तो थेरेपिस्ट जो सबसे ज़्यादा डैमेज थेरेपिस्ट कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि दे ब्रिंग इन देयर ओन बायसेस एंड ओन वैल्यूज इन द थेरेपी सेशन. आई थिंक दैट्स द मोस्ट डैमेजिंग वे. A therapy session could be ruined, like the best way to ruin a therapy session. For example, कि अगर एक if there's a single woman in her 40s and she's going to a therapist who got married in her 20s and she's saying कि I like to be single or this and that, and she's be like क्यों आपको पता नहीं है शादी कितनी अच्छी चीज होती है, and I'm like ठीक है, this could happen. He's laughing. So this is the best way that therapist can actually damage you, that she's actually going to go home and think about it, really am I missing on something. And this has happened, I've seen that happening, I've heard from people. दूसरी चीज़ ये कि अगर आप थेरेपी सेशन में गए और आपके ट्रॉमास सब याद आए और आप बहुत रोए, दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग. आई नो इट कुड बी कंसिडर्ड बैड कि आप तो अच्छे मूड में गए थे और आप तो रोते हुए निकले और अगले हफ्ते भी रोते रहे, बट इट ओनली में देखिए थेरेपिस्ट ने आपको कोई नई बात तो रोने के लिए नहीं बताई. जो भी था आपका अपना ट्रॉमा था, आपकी अपनी ग्रीफ थे, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, वो सर्फेस पे आई. एंड दैट इज़ वेरी कॉमन. एंड आई ऑलवेज टेल पीपल, जब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है तो ऑलवेज टेल पीपल कि मे बी वो, और शुरू शुरू में ये होता है कि दे टेल मी ओ माई गॉड दे स्टार्ट फीलिंग सो गुड आफ्टर थेरेपी, एंड आई एम लाइक ओके वेट, देल बी सेशंस व्हेन यू एक्चुअली वांट टू किल मी आफ्टर द सेशन, बिकॉज आई बी एक्चुअली मेक, yeah, probing, right? And but I want you to stick through those sessions, because then at the end of the day आप उसको भी accept कर लोगे, उस grief को accept कर लोगे. So for example, father's death, my father and mother both have passed away. They passed away from COVID and it was a huge trauma. ठीक है, you start talking about it, I'll start crying right now in front of you. But the thing is to have that acceptance in my life, that grief is not going anywhere. That trauma is not okay, the trauma can be resolved, but the grief gonna stay with me through
through, till I go in my grave. So the thing is, to have that acceptance is very important, because there's no ignoring this fact that my parents passed away. I cannot ignore this fact, and no one can. If someone says कि नहीं मैंने ignore कर दिया था, मैं 6 महीने रहा, that's a lie. You cannot really. It will come out. It will resurface in so many other ways that would bother you. That would have some effects on your personality, and you don't want that. You want to create an acceptance there. So yeah, if you talk about my parents, I might cry as well, and that's all right. And then फिर मैं सही भी हो जाऊंगी थोड़ी देर के बाद. I I'll think get we back to all life have again. some form of trauma. I mean, all of us sitting here in this Yeah. entire room, but how to process it, how to speak about it. मतलब even accepting is तो वो तो एक बिल्कुल last stage है, right? it's a cycle of life also. Yeah, it is. मैं भी सेम इस चीज से गुजर चुका हूँ, और मुझे पता है कि जाहिर सी बात है, यू स्पेंड योर होल लाइफ विद योर पेरेंट्स, मदर, तो आपके वो आप एक चीज, एक कनेक्टिविटी खत्म नहीं हो सकती उससे, Yeah. तो वो फीलिंग वही रहती है, बट आपको अपने आप को समझाना पड़ता है ये चीज कि यार ये एक साइकिल ऑफ लाइफ है, कि इसी तरह हमने जाना है। Acceptance ना. हाँ बिल्कुल, तो वो अपने आप को समझाना पड़ता है। अगर मैं भी अभी सोचना शुरू करूं तो वो चीज राइट, कि वही मुझे फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो बस वो ये कि आप एक्सेप्ट करना पड़ता है। या रिसर्च ये प्रूव करती है कि अगर आप वर्कलोड बढ़ा देते हैं और ऑटोनॉमी कम देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो बर्नआउट की तरफ बहुत तेज़ी से चले जाते हैं। सो द थिंग इज़, आई थिंक दिस इज़ द ट्रबल दैट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रबल, कि वर्कलोड बढ़ गया है और ऑटोनॉमी कम है लोगों के पास। तो व्हाट पीपल नीड टू डू इज़ कि आप उन्हें ऑटोनॉमी तो दें, क्रिएटिव स्पेसेस तो दें। जो बॉसेस की भी बुराई हो रही होती है, ठीक है, पे भी हो रही होती है, आई एग्री, सही बात। वो तो खैर एक पाकिस्तान का एक फैक्टर है ही। लेकिन द थिंग इज़ कि इस बात पे भी बहुत होती है कि यार काम तो बहुत ज़्यादा है, बट देयर इज़ नो स्पेस फॉर क्रिएटिविटी। लाइक आई वांट टू डू दिस वर्क इन माय वे, लाइक माइक्रो मैनेज भी करें, आपने ऑटोनॉमी तो दी नहीं एम्प्लॉय को, तो अब वो काम कैसे कर पाए, उसके सर पे भी चढ़े हुए। सो दिस इज द इशू आई थिंक आई सी मोस्ट। हरासमेंट, यस यस, ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। अच्छा, एंड ये भी बड़ा, अब क्योंकि रीसेंट पास में मी टू मूवमेंट और तो थोड़ा हाउ, बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी, बिकॉज यू कैन नेवर बी श्योर के विच साइड इज राइट, तो हाउ डू यू डील विद इट? क्या कोई आर देयर पैरामीटर्स वेयर यू चेक कि राहिल यार आपको रोजाना मुझसे बड्डा ये करना थोड़ी होता है, check रोजाना करती है आपको मुझसे बड्डा करना आई वाज, यस, आई वाज अबाउट टू से कि वो ये शुक्र है वो थोड़ी एचआर का check- काम है, मेरा नहीं है। मेरा बिल्कुल, मैं इसलिए एचआर में कभी काम नहीं कर सकती। No, but still, I mean, I'm sure people go through it, and when they come to you, I mean, like, is it a like psychological barrier? क्या होता है वो जो वो feel कर रहे होते हैं? What do they go through? That's my question. Yeah, it totally depends on the person's how the person take it, how, what's the age of that person, what's the gender of that person as well. It totally depends on these factors. However, there has been incidents where people have come to me and they didn't even realize that it's harassment. They are saying that, there's something wrong, they know there's something off, this wrong. And when there was a moment that I said it, so this is harassment, you are getting harassed, and they were like, oh shit, I'm getting harassed, right? And then they're like, oh, that's why I'm feeling the way I am, that I can't stop thinking about it, and I'm feeling so bad about this. So this is harassment, and do you think I should like take an action as like, and then you kind of advocate for the client. अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, वो ये बताएं कि साइकोलॉजी, और अगर इसको हम रिलीजन से कनेक्ट करें तो क्या क्या हो सकता है? मतलब कुछ बैलेंस आता है या बेहतर होता है, क्या होता है? कुछ एक्सप्लेन करें इस चीज को। सो इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक फैक्टर तो ये है कि जैसे अगर मैं प्योरली रिसर्च की बात करूँ, ठीक है, तो यूएस में होती हैं सब। मैंने दोनों मास्टर्स यूएस में किए हैं, यूएस में काम सही किया है, है। तो मैं यूएस की रिसर्च के बारे में बात करती हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ उन लोगों की बेहतर है जो लोग रिलीजियस हैं, रिलीजियसली इंक्लाइंड है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। क्यों बेहतर है? अब आप उन वेरिएबल्स को डाइसेक्ट कर लें। कम्युनिटी लिविंग की वजह से, क्योंकि जो लोग रिलीजियस होते हैं, योर एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द सोशल सपोर्ट दे प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो लोग, अगर हम रिसर्च के ऊपर बात करें, तो जो चर्च जा रहे हैं उनको चर्च से बहुत सपोर्ट मिल रही है, सोशल सपोर्ट भी मिल रही है, इमोशनल सपोर्ट भी मिल रही है, मे बी इवन एट टाइम्स टैंजिबल सपोर्ट भी मिल रही है, ठीक है, एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। फिर देर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल, जिसके अंदर फेथ आ जाता है, ठीक है, कि जिसमें फेथ के अंदर एक बैलेंस है बिटवीन वर्किंग एंड सरेंडरिंग, ठीक है, विच वी ऑल्सो वर्क इन साइकोलॉजी. So yes, there are various factors in religion, different religions, and like वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा religion सही है, है। but that can be actually used for the benefit of people.
However, saying that, it does not mean कि, someone who's an atheist wouldn't have a great mental health. Not at all. Not at all. Those, we have dissected those variables, and they can totally apply those variables in their life and have a fantastic living. But yes, being religiously inclined does have certain factors that can It make you, helps. that can help you, yeah. अच्छा, वर्क प्लेस से हम बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि लाइक अ लॉट ऑफ आप बिलियनर्स मिलियनर्स को देखते हैं एंड दे एंड अप, जब आप देखेंगे तो लाइन से वो भी किसी थेरेपिस्ट के ऑफिस के बाहर ही बैठे होते हैं, ऑल्दो मे बी उनकी सक्सेसफुल वो बहुत होते हैं इन वर्ल्डली आइज, या दूसरा कोई देखे होगा कि यार ये तो 4 कंपनियों का मालिक है, बट दे एंड अप गेटिंग वांटिंग द हेल्प. तो वो सक्सेस जो आपके पास लोग आते हैं, इसके अंदर वो व्हाट आर दे लुकिंग फॉर एक्चुअली? आई मीन, इज देयर सक्सेस इन्वॉल्व? इज इट जस्ट मेंटल पीस के बारे में? इज इट ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट इज हैपनिंग एट देयर उनके घर पे कोई ऐसी चीज हो रही है जिस वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द मेन, कौन से 2-3 इश्यूज हैं जो आपको लगता है कॉर्पोरेट में अफेक्ट करते हैं? कॉर्पोरेट में इफेक्ट करते हैं, आई थिंक ये, देखिए, जो अगर कॉर्पोरेट की स्पेसिफिकली बात करें, जब आप ये कह रहे हैं कि अगर उसकी 4 कंपनीज हैं, तो फिर वो, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज 4 कंपनीज एज वेल. सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वो पैसे अच्छे कमा रहा है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो देखिए कितनी ज़्यादा है, जो उसको रात को सोने नहीं दे रही है. सही बात है. स्ट्रेस. yes. And definitely what I see with these ambitious people, जैसे आप अगर 4 कंपनी, जैसे super ambitious people की बात हो, super ambitious people जो हैं, they hold very high standards for themselves, very high standards. उसकी वजह से they do not prioritize self care at times, they do not sleep well, they sleep for like 4 to 5 hours, okay? They want to work more, they do not take Saturdays off, and that's why, because of that imbalance, this creates certain problems in their for their physical health as well and mental health as well. So these are the issues that I see with highly ambitious people. अब जैसे ये इस किस्म के लोग होते हैं, a lot of people assume कि they are, insert bad word here, they are, they're maybe a little self-obsessed, they don't have a great work-life balance, they might not be giving their family, enough time. So what kind of advice would you give people who are maybe too ambitious? Is there I mean, is there such a thing? Yeah, I see, each to each its own. सही है. अब अगर उसकी यही है ड्राइव, तो who am I? ठीक है, I'm just someone who helps supports mental health, right? Who am I to dictate you how to live your life? If that's how you want to live your life, I mean, great for you. I mean, I don't think Elon Musk would be happy having the traditional American life with a suburban home and 2 dogs. I don't think so. I think he would hate it, right? He'd be like, hey, I underperformed. So the thing is that this is how he derives his fulfillment. बट ऑब्वियसली, जो अगर हम हेल्दी मार्कर्स की या हेल्दी इंडिकेटर्स की बात करते हैं फॉर लॉन्जेविटी, तो उसके अंदर तो सपोर्टिव रिलेशनशिप्स आते हैं. और हार्वर्ड की एक स्टडी है, वो भी आप आराम से टेड टॉक देख सकते हैं. वो उनकी कोई 40 साल लॉन्ग लॉन्जिट्यूडनल स्टडी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई, आपने खुश रहना है, आपने ज़्यादा जीना है, आपने सेहतमंद रहना है, ठीक है, आपने दवाइयाँ नहीं खानी है, तो आप अपने सराउंड कर लें अपने आप को प्यारे फैमिली मेम्बर्स से, प्यारे फ्रेंड्स से. दैट्स अबाउट इट. एंड इट इन्वॉल्व 3 social classes as well, that study. So that study was like, it was 40 years long, वो 3 social classes पे थी, और फिर उन्होंने ये कह दिया कि भाई, it comes down to your amazing loved ones around you. So your company basically. बिल्कुल. एक Yeah. Your एक्सटर्नल friends, सक्सेस family. होती है, एक इंटरनल सक्सेस होती है. तो Yeah. एक्सटर्नल सक्सेस, ठीक है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, Yeah. maybe you have a giant business, maybe you're Elon Musk. Yeah. Internal success, maybe you have peace, Yeah. maybe you have, you're proud of yourself, maybe you have great relationships with your family. 100%. So how can you achieve both? balance, to have that balance. And I think this is the biggest challenge, to achieve that balance, where you feel that now all areas are being, see there are so many areas now. There's career life, there's family life, there's your personal Just like self-care. Japanese people, they are like people in Japan. उनकी एज आप देख लें कितनी होती है, 100 years, 90. उन्होंने एक वो अपनी लाइफ के कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं कि उन्होंने क्या करना है, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ हैप्पीनेस, वो सब उन्होंने ढूंढे हुए हैं अपने अंदर से. अच्छा, वो मुझे जो करना चाहते हैं, वो जो अचीव करना चाहते हैं, उसी को फॉलो करते हैं एज अ प्रोफेशन भी. तो बस वही चीज है कि आप वो अंदर वाली जो है वो आपके ऊपर ही है चीज,
कि you are responsible for your happiness ज़्यादातर। मुझे लगता है वैसे लाइक अगर हम रिलीजियसली भी देखें या वैसे भी मुझे लगता है कि लाइफ तो शायद नहीं बढ़ती अगर आपकी 80 साल है आप इस समय मर जाएंगे, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ कि आप जी कैसे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल हु स्मोक, मुझे कहते हैं, कोई कहता है जल्दी मर जाए, मैंने कहा जल्दी नहीं मरेगा, ये खांस खांस के और बिस्तर पे ट्यूबें लगी हुई होंगी, मरेगा ये उसी टाइम पे जब इसको मरना है। बट देन अगेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या यार कैसी वो है। भी नहीं पता होता, कभी कभार ऐसा भी होता है बहुत हेल्दी लोग होते हैं और उनको ऐसी चीजें डायग्नोज होती हैं जो वो सोच भी नहीं सकते कभी। तो बस ये मैं भी कह रहा हूँ कि वो इट्स तो लिखी हुई है, बट हाउ यू स्पेंड दैट, वो जो आपके साल हैं वो आप कैसे गुजार रहे हैं कि बेहतर कर सकते हो जितना आप कोशिश कर सकते हो। But it's not just about physical, right? It's about internal happiness. क्या आप मेंटल हाँ और हाँ क्या आप इंटरनल यार। meditate कर रहे हैं, या are you contributing to society, or are you spending quality time with your family? मतलब all मतलब these आप क्या फील, factors. आप बताएं आप क्या फील करती हैं? Personally, हाँ हाँ बताएं बताएं। I feel very proud of myself. I think That's I'm a great. spiritual person. I think I'm contributing to society. I try to spend quality time with my family as much as I can. So मतलब मैं कोई मतलब आई एम नॉट 100% कि हाँ मैं कोई एंजल हूँ, बट आई ट्राई कि मैं as much as possible I try to do as much as I can. I'm sure there are people who are doing much more than me. I need to work on myself. वो एक चीज है ना कि आप एक्नॉलेज भी करें कि हाँ बिल्कुल सही आई बात है। नीड टू वर्क ऑन these things. अच्छा, And एक जो हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमन है ना, दूसरों का हम ऑडिट शुरू कर देते हैं कि यार ये फलाना बंदा ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। यही होता है। तो बहुत कम स्टेजेस में ऐसा होता है कि आप अपना ऑडिट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, जब अपना ऑडिट करते हो तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट आई थिंक कि आपको पता लग रहा होता है यार आपकी क्या गलती है क्या नहीं है, और ये गलती है तो ये गलती कैसे सही होगी। और उसमें अक्सर दफा बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंसान के पास के एनवायरनमेंट से है या कोई बैड कंपनी से आई हुई है, आपके अंदर आई हुई है। तो इसमें आप कैसे हेल्प करती हैं उनको वो चीजें? लेट सपोज ड्रग्स है अगर, Oh, सही है, और आपको आदत है किसी चीज की इस heavy तरह topic. की, या वो है, Yeah, चलो ठीक है, वो रिहैब में तो वो चले जाते हैं या वहां से भी वो yeah. खत्म कर चुके हैं, लेकिन उनके माइंड में या फिर कोई और ऐसी कोई बुरी आदत है, तो वो उसमें आप किस तरह हेल्प करती हैं कि ऐसे पेशेंट अगर आपके पास आते होंगे डेफिनेटली। Yes. So the thing is कि uh, I'm sorry, first question का facet क्या था? First जो आपने दो questions पूछे आपने, एक तो drugs वाला, पिछला question क्या था आपका? पिछला मेरा क्वेश्चन यही था कि जो लोग अपने पास से अपनी जब वो ऑडिट Yeah, करते हैं audit, या audit, audit. So the thing is, therapy is about self-reflection. It is about assessing yourself. Definitely, that is what therapy is about. अगर आप आके अपनी अम्मा अब्बा की बुराइयां कर रहे हैं थेरेपी सेशन में, सो द थेरेपिस्ट इज it's their responsibility to bring that to you. Okay, this is how you feel. ठीक है, this could be the reality, not be the reality, but this is how you feel. So can we like change the lens here? Like अम्मा अब्बा की बुराइयों से can we just फोकस ऑन यू। focus on you, right? So this is the responsibility of the therapist. दूसरा ये कि ड्रग, नो आई डू नॉट डील विद पीपल who go through substance abuse. There are different, this is a different field of psychology and there are different people who do that. Like psychology के अंदर different वो हैं, सब specialization है. But then again जब हम substance abuse की बात करते हैं तो फिर इसके अंदर वही है ना कि start क्यों हुई, ऐसे कौन से एरियाज थे लाइफ के जो फुलफिल नहीं हो रहे थे, इवन जबकि जब बच्चे कहते हैं कि पीयर प्रेशर में शुरू हुई थी, तो पीयर प्रेशर में भी क्यों शुरू हुई थी, ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन सी कमियां आई थी कि अपनी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी कि आप पीयर्स से इतने इन्फ्लुएंस हो गए. ठीक है, व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, एंड टू काइंड fill that gap, like no, you are complete, you can do that, or to help them develop their personality in a way that they can get out of the influence, whether it be substance or anything else. अच्छा, कमिंग टू व्हाट वी आर, द एनवायरनमेंट दैट वी इन राइट नाउ, सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है इस वक्त. Yeah. एंड मेरे ख्याल में 80% डिप्रेशन जो है की वजह आई मुझे लगता है सोशल मीडिया भी आज तक, बिकॉज लाइक आई रिमेंबर मैं एक दो बीच पे दोस्तों के साथ गया तो आई सॉ दिस गर्ल इन 3 डिफरेंट आउटफिट्स. Wow. तो मैंने कहा ये अभी इसने फिर चेंज किया है, अभी तो मैंने कहा शायद चलो बीच में आए, मगर वो हर थोड़ी देर बाद चेंज. अच्छा वो पानी में भी नहीं गई, बीच पे आए वो पानी में नहीं गई, उसने 3-4 आउटफिट्स चेंज करके वो चली गई. मैंने कहा सही. फिर बाद में मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा उसको तो वो हर 3 दिन बाद उसने वो लगाई है कि एट द बीच अगेन.
तो उसने पूरी अपनी लाइफ जो दिखाई, मिजरेबल लाइफ उसकी, और लड़ाइयाँ होती रहती हैं, दोस्तें जिनके साथ आई किसी से बात भी नहीं करी, वो अकेले से तस्वीरें खींच रही है अपनी, एंड ऑल शी वांट्स टू टेल पीपल दैट दिस इज माय लाइफ एंड आई एम सो सोशल एंड आई एम मैं ये तो ये जो इस तरह के इन्फ्लुएंसेस है, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है आपके लिहाज से ये साइकोलॉजी पे, एंड आपके पास कितने लोग ऐसे आते हैं जहाँ यू कैन सी थ्रू के यार ये मसला यहीं से स्टेम हुआ है? ये तो खैर इशू है कि लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को लोगों की डिजिटल प्रेजेंस से, सही है, और डिजिटल प्रेजेंस डजंट मीन एनीथिंग। आई मीन अभी मैंने आपको अपनी एक पास्ट हिस्ट्री बताई है विच सोशल मीडिया पे मैंने कभी भी नहीं लगाई, सो द डिजिटल हिस्ट्री डिजिटल प्रेजेंस डजंट मीन एनीथिंग। तो लोग करते हैं कंपेयर, बिल्कुल करते हैं कंपेयर अपनी, स्पेशली जो मेरे पास आती हैं खवातीन अपने रिलेशनशिप्स को कंपेयर करते हुए, मतलब लोगों के हस्बैंड्स क्या क्या करते हैं मेरे हस्बैंड हाँ, नहीं सही करते बात है, ये, सही बात है। ठीक है। सो ऑब्वियसली टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट इज़ रियली इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि ये सच नहीं है। दूसरी चीज़ जो है ना, जो सोशल मीडिया का इशू है मेन जो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है, वो ये कि जापानीज़ ने बहुत पहले कहा था कि जो मेंटल हेल्थ है ना वो बड़े या हेल्थ डिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। और जापानीज़ ये भी कहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी भी आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, आप किस काम को कितनी पीक तक लेके जाते हैं भी आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। सो अब हमें चाहिए, कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है कोई भी, अब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम कंसंट्रेशन से करें, वी आर ऑल फुली हियर, अगर हम में से कोई एक भी फुली हियर नहीं होगा ना तो इस पॉडकास्ट में इतना मज़ा नहीं आएगा। सेम इज रिक्वायर्ड फॉर एनी वर्क टू डू, एनी क्रिएटिव प्रोसेस। द इशू विद सोशल मीडिया इज कि सोशल मीडिया इज अ डिस्ट्रैक्शन इन एवरीथिंग। ऑन टॉप ऑफ इट वो जो स्क्रॉल कर रहे हैं हम वीडियोस 10-10 सेकंड की, वो हमारा कंसंट्रेशन का जो स्पैन है वो छोटा कर रही है, हाँ, सही बात है। ठीक है। अब और हमारा बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत यस, बच्चों के साथ तो बहुत बहुत बड़ा ज्यादा इशू है। हो रहा है ये। तो अब हमारा कंसंट्रेशन का स्पैन छोटा हो गया है, तो हम क्रिएटिव वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं सही से, हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। हम सही एक बात है। घंटा, आई टेल यू, आई कैन गारंटी कि 90% लोग एक घंटा बगैर किसी चीज़ के नहीं बैठ सकते। आप उन्हें बिठाते हैं, आप उन्हें सही क्या बात सोना है। नहीं, ठीक है, बैठे रहो, मतलब बस सोचो या नहीं सोचो, आई डोंट नो, जस्ट डोंट बहुत डू बहुत एनीथिंग। जबरदस्त बात बोल रही हैं आप, ये मेरा ख्याल से। Yeah, and they wouldn't be able to do that. I do not think that was an issue with our parents though. I think our parents could have easily done it. वो 4 घंटे भी बैठ जाते. So how do you think that affects our mental health? Oh, that affects, that is the, आपकी concentration नहीं होगी, आपको anxiety होगी ही होगी. होगी ही होगी anxiety. अच्छा, एक और बड़ा सेम सब्जेक्ट पे मैं किसी को सुन रहा था, तो उन्होंने बड़े मजे की बात की। उन्होंने कहा कि भाई व्हेन यू लुक एट सोशल मीडिया, वो एक बेसिकली यू लुक एट थिंग्स दैट यू लाइक, और वो एक छोटा सा डोपामीन आपका डोपामीन कीप्स ऑन फ्लोइंग। तो कह रहे थे आइडियल तरीका डोपामीन का ये है कि व्हेन यू डू समथिंग, यू अचीव समथिंग, यू फील दैट एंड देन द डोपामीन रिलीजेस। इसमें क्या हो रहा है कि डोपामीन रिलीज हो रहा है बट यू नॉट डूइंग एनीथिंग, यू नॉट वर्किंग फॉर इट, इट्स जस्ट फ्लोइंग, एंड देन वही वो फ्रस्ट्रेशन है वो, और फिर देन यू हाउ यू जो आपका दिमाग किस तरह रीड करे उन चीज़ों को, वही है फिर आप अपने ऊपर गए कि मेरी लाइफ तो ऐसी है नहीं, ये देखो इतना खुश है। वही है कि आपने रिलेशनशिप में देखा फूल ला के दे रहा है, ये नहीं पता कि उनकी आपस की रिलेशनशिप क्या, भाई जस्ट कि व्हाट यू सी इज हाउ यू परसीव के दुनिया तो ऐसी होनी, दिस इज द परफेक्ट वर्ल्ड, एंड वो डोपामीन आपके दिमाग में आ रहा है बट वो नेगेटिवली आपको अफेक्ट कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई थिंक सोशल मीडिया डज। Also it affects your memory. सो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसका कोई पॉइंट नहीं है, आई टेल यू, और हम उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर सकते, हमें इतनी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन, बात है। ठीक है, लेकिन 100%। लेकिन हमारी मेमोरी लिमिटेड है। इट्स देयर इज अ लिमिट टू मेमोरी कि मैं आज दिन में इतनी चीज़ें याद रख सकती हूँ, इतनी चीज़ें याद कर सकती हूँ। तो मेरी लर्निंग तो ख़राब हो गई ना, लर्निंग में तो वो आ गया, एरर आ गया, क्योंकि मैं तो जो मैंने मीडिया कंज्यूम किया है अब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ है। अच्छा, तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आजकल हम बहुत सुनते हैं, विच इज हसल कल्चर। तो व्हाट इज हसल कल्चर एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दिस कल्चर, एंड व्हाट आर द उसके फायदे और नुकसान दोनों पे? Hustle culture is an American term, and it came from the idea that, you know, keep on, you love what you do and then keep on doing that, you know, so you don't even have to take any day off and you can just keep on working and be on it till you achieve wherever you want to be. um, and this China has also adopted that. I think China is facing a huge issue here क्योंकि उनका तो they call it 996, like 9 to 9 6 days a week. वो तो घर नहीं जा रहे होते हैं, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, वो तो पता नहीं। बेड भी वहीं लगे, हाँ, बंक पैड्स लगे हुए हैं यार, बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज दैट, यू नो, इफ यू अगर हम साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से देखें या ह्यूमन इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इंडिविजुअल को तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए।
जो उसकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस भी बनाती हैं, जो उसको पीस भी देती हैं, ट्रैंक्विलिटी भी देती हैं, जो उसको हेल्दी भी बनाती हैं। वो तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसमें सिर्फ वर्क नहीं है। नो मैटर आप बहुत भी फाइनेंशियल और करियर वाइज और प्रोफेशनली बहुत सक्सेस भी हासिल करने, बट दैट इज नॉट द ओनली सक्सेस, राइट? देयर आर अदर एरियाज एज वेल। सो वो नीड्स और वो इमोशनल नीड्स भी फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हम लोग इस तरफ लेकर चले जाएंगे लोगों को कि हम कहेंगे कि हासिल कल्चर, नॉट दैट पाकिस्तान इज एनीवेयर क्लोज तो गॉड। लेकिन ये कि अगर हम इस तरफ लेके चले जाएंगे जो कि अमेरिकन ने भी किया है, सो अमेरिकन की फैमिली लाइफ तो बहुत रुइन हुई है, बहुत रुइन हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो रिसर्च प्रूव करती है कि बहुत रुइन हो चुकी है। सो अब चाइना भी इसी कदम पे, इन कदमों पे चल रहा है, तो उनकी भी फैमिली लाइफ रुइन होने लग जाएगी। तो जब हम फैमिली लाइफ रुइन होने लग जाती है, तो देन अगेन उसका भी तो ग्रेटर इम्पैक्ट सोसाइटी पे ही आता है। Of course. ठीक है, आपने हसल कल्चर इंट्रोड्यूस कराया सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, एंड सोसाइटी बेहतर हुई भी, लेकिन अब अगर इंडिविजुअली हर बंदा सफर करेगा तो भी उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली सोसाइटी पे आना है और सोसाइटी खराब होगी। सो द थिंग इज दैट वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस हियर। ऑब्वियसली पीपल शुड लव व्हाट दे डू, दे शुड फाइंड आउट, दे शुड डू इट, एंड दे शुड वर्क। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, like, I don't even want to use the term work hard. Actually a very successful businessman in Karachi, I asked him and I'm like, so what's, if you have to identify कि आपने सक्सेस कैसे हासिल किया, आप किसी नए बिजनेसमैन को क्या देंगे एडवाइस? तो उन्होंने कहा, आई वाज लाइक कि वर्क हार्ड। मैंने उनसे पूछा, मतलब सही। जान के उन्हें प्रोब करने के लिए, ताकि उन्हें थोड़ा सा गुस्सा सही जवाब दें। तो ही वाज लाइक कि नहीं, आई वुड से कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट पे गौर करें। Time is the greatest investment. So if you're investing your time, if you're the first person to come to the office and being the boss, like being the CEO, ठीक है, and the last person to leave, then automatically your employees would want to work. Say, because you're investing your time. It's not about working hard. It's not about making other people work hard. It's just about the investment of time. And that makes a lot of sense for me. So that, but on top of it, like obviously creating that balance where you can go back home. अच्छा, अब मैं इसमें अगर corporates की बात करूँ तो यार corporates have taken some great initiatives even in Pakistan, जैसे कि hybrid cultures. Hybrid culture is a great way to even add more inclusion and diversity, क्योंकि उसके अंदर women आ जाती हैं, उसके अंदर pregnant women भी आ जाती हैं, mothers भी आ जाती हैं, उसके अंदर disabled लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, and then there are disabled people, there are people who have chronic illnesses, they really cannot wake up every day and go to commute to work. But if the culture is hybrid और आप डेडलाइन बेस्ड काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई ये काम है, ये आप मुझे जमा कर दो, आपको क्या लगे अगला, किसी की, मेरी कैपेसिटी हो सकती है कि मैं 10 घंटे में करती हूँ, इन फारिया की कैपेसिटी हो सकती है सही वो वही बात है। काम 4 घंटे में कर देती है। कंपनी को इस बात से क्या लगे कि फारिया भी 10, वो क्यों कहें कि फारिया भी 10 घंटे काम करें तमाजुर की तरह? फारिया could work if she's producing the same amount of work in 4 hours. Why do you care if she comes at 9 and leaves at 5? But, and the thing is that what I see with big names right now, they really don't care. उनके क्लॉक इन क्लॉक आउट इज आउटडेटेड। वो क्लॉक इन क्लॉक आउट नहीं करा रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप हमें ये काम है, ये काम finish प्रोड्यूस करो, करके और दो। एंड पे उनकी परफॉर्मेंस शीट बन रही है कि ये सही आपने बात है। परफॉर्म करके दिया, एंड दैट इज नॉट बाय दी के जो है वो उन्होंने कितने घंटे के अंदर वो काम करके दिया, बट व्हाट आर द अचीवमेंट? सो डेफिनेटली कॉर्पोरेट्स आर टेकिंग सम ग्रेट इनिशिएटिव्स हियर, एंड आई थिंक दिस शुड बी द कल्चर. But then again, I don't know if it can be applied to every corporate or not. बट ये अब काफी कॉमन होता जा रहा है यहाँ पे। मैंने देखा है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में कि उनके एनुअल टारगेट्स हैं एम्प्लॉइज के कि हाँ, आपने क्या करना है। milestones के साथ लाइन मैनेजर उनके टारगेट्स दे देते हैं और वो टारगेट्स फॉलो करते हैं उसके, Yeah. और उन्होंने अचीव करना होता है। टाइम नहीं है, बट वहां पर एक चीज है कि प्रेजेंस होना होता है, एक मैटर करता है कि आपकी प्रेजेंस हो वहां पर। वो कोई टाइम नहीं देखता, ना वो पैसे काटते हैं, कुछ भी नहीं करते, बट आपकी प्रेजेंस की नीड होती है वहां पर। Yeah, yeah. ऐसा नहीं है कि बंदा एक दिन गायब हो गया पूरा या 2 दिन नहीं आ रहा, बट having doctors and psychologists and different type की, अब ये भी एक नया इंट्रोडक्शन है, कॉर्पोरेट्स ने ही किया है कि आपके ऑफिस इन्वायरमेंट में या आपके कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स में ये लोग भी। हाउ डू यू सी दिस, लाइक इज इट अ करियर पाथ जो आपको लगता है कि और लाइक अभी भी जितने ज़्यादातर लोग किसी अपना क्लिनिक खोल लेते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर वो होते हैं, इज Yeah. दिस अ फील्ड दैट यू थिंक पीपल कैन थ्राइव इन, एंड इज इट अ लाइक किस तरह से आप इसको देखती हैं? बिकॉज
you're doing both. Oh, So yeah. how do you see कि किस तरह से ये is this a career that people should look forward to? सो दिस साइकोलॉजी की फील्ड से कहते हैं ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी, और ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और वो बाकी दुनिया में यूएस में तो स्पेशली होते हैं, एंड दे वर्क इन एचआर. दे वर्क इन एचआर एंड दे डेवलप दे डेवलप डिफरेंट पॉलिसीज. उसमें वो हेल्थ का भी देख रहे होते हैं एस्पेक्ट, बट वो यूजुअली ऐसी पॉलिसीज देख रहे होते हैं विच आर रियली गुड फॉर पीपल, एंड वो जो भी उनसे फीडबैक मिलता है फिर उनको चेंज करते हैं. सो ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड. आई एम नॉट एन ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट, और मैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर जाती भी नहीं हूँ. दिस इज नॉट माई फील्ड. मैं स्पेसिफिकली सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ये वो प्लान्स बना के दे रही हूँ जिनसे उनके एम्प्लॉयज हेल्दियर हो सकते हैं. दैट्स अबाउट इट. दैट इज माई पार्ट टू प्ले. मैं उनकी पॉलिसीज के अंदर नहीं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं. आई एम लाइक यार दिस इज द प्लान एंड दिस कुड एक्चुअली लीड टू, इफ यू वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज, बट व्हाट इज द बिहेवियर दैट यू वांट टू चेंज? यू वांट देम टू स्लीप वेल? ओके, आई टेल यू व्हाट आर सम ऑफ द इंटरवेंशंस. You want them to exercise more? Okay, these are the things we can do. So I'm working on this level. जो occupation आप बात कर रहे हैं कि working in corporates, this is occupational psychologists do that, and that's a completely different field, and that is an amazing field. People should definitely go there. I think psychologists में सबसे ज़्यादा वही earn कर रहे होते हैं, and they did work for different corporates. So it's a very interesting field. The realities हैं, and वही बात है कि I think everybody needs to like बड़ी I think वो क्रिस रॉक की एक स्टैंड अप है, टैम्बरीन करके उसका स्टैंड अप, उसमें बड़ी अच्छी बात होता है, कहता है कि भाई you can't like in a relationship you can't just show up. You have to show up with your best game every day. आप ये and one ये है, दूसरा है कि you have to be a tambourine player. मकसद ये था कि टैम्बरीन जो है वो बेसिकली झुंझुना बजा रहा है और वो सबसे पीछे खड़ा होता है, उसमें ना स्पॉटलाइट है, ना उसको कोई देख रहा है, ना उसको कोई जानता है, सब ड्रमर और गिटारिस्ट को देख रहे हैं. तो कहता है यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी प्लेइंग द सेम ट्यून एवरी डे एंड ऑल्सो शो अप विद एक्साइटमेंट विद, बिकॉज व्हाट मेन यूजुअली डू इज कि जब शादी से पहले वेट भी कम कर लिया, बाल भी सही हो गए, सारा कुछ हो गया, फिर विद टाइम दे स्टार्ट टेकिंग द रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड. इवन वुमेन डू दैट द सेम, एंड देन वो इनिशियली वो फिर कोई एक दूसरे को बोल भी नहीं सकते कि तुम बुरे लग रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो, एंड देन इवेंचुअली वो यही होता है कि बबल अप होता रहता है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें. तो आई थिंक इट रियली आपको अपनी यू हैव टू कीप वर्क, लाइक आप बिजनेस पे करियर पे वर्क करते हैं, और बैलेंस रखना चाहिए आपको रिलेशनशिप चीजों पे के भी अंदर, वर्क करना ज्यादा एवरी डे बड़ा जरूरी है. Okay, so if we take this same reference to the workplace, how do you think it applies? How do you play the tambourine in the workplace? I think then again, communication is very important at workplace as well. Communication is very important with the colleagues and with the boss as well. So having clear boundaries, having good self-esteem, but then having to communicate that as well. For example, if you feel कि आपका boss आपको micromanage कर रहा है, you need to learn that you have to communicate that very smartly. Obviously not in a way that you offend people. That it's not an excuse, right? You cannot do I that. think ये एक skill है. I think And you need to it's learn not it. easy. Yeah. Like I had a friend, तो उसको हमेशा लगता था कि यार मुझसे ज्यादा पैसे दूसरों को मिलते हैं. मैंने कहा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो उसको 70,000 मिल रहे थे उस वक्त. तो कहता है यार मुझे लगता है मैंने कहा तुम्हारी वर्थ तुम्हें लगता है क्या? कहते हैं 150. मैंने कहा go to your boss, tell him कि सर मुझे ये फील होता है, this is what I feel कि I should get, what do I need to do to get there? तो मैंने कहा अब तुम जाके बोलो सर मेरी तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, धमकियां दे के तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें दे देगा, या आपने कुछ बोला ही नहीं, ओके सर निकाल रहे हैं, ओके बाय. हाँ, और रोज स्कोर रहे हैं. लाइक यू सेड कि आई थिंक कम्युनिकेशन ये मगर लर्निंग है, ये दिस यू नीड टू लर्न. एक हमारा दोस्त है, उसके साथ 100%. यही हो रहा था, उसको निकाल रहे थे. मैंने उससे बड़ी अच्छी एडवाइस दी, राहिल भी था उस वक्त, कि भाई तुम जाओ बॉस से बात करो, बिल्कुल बताओ उनको ये प्रॉब्लम्स है, ये है और यूं नहीं होगा, ये होगा. लेकिन उसकी कोई हिम्मत नहीं हुई, वो बेचारा अपना रेजिग्नेशन ले उठाया उसने और वो निकल गया वहां से. कोई बात नहीं कर सका, वो परेशान था उस वक्त कि यार मेरी जॉब जा रही है, ये वो. बट ये होता है कि आपको बात करना पड़ता है. इसी तरह एक पास्ट में एक दोस्त था मेरा, तो वो हमेशा बोलता था यार सबसे ज्यादा वो काम करता था और सबसे ज्यादा वो ही सुनता था. ठीक है ना. तो वो मेरे पास आया, कहने लगा यार ये प्रॉब्लम है, मुझे जो है ना बॉस इतना ही सुनाता है और मैं तुम लोगों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा मैं काम करता हूँ. तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया था कि यू आर नॉट अ गुड मैनेजर बेसिकली. सही है ना. तो आप अगर नहीं, आप क्यों, आप बोलो, बताओ कि ये प्रॉब्लम है, यू नीड अ पर्सन नाउ, या अपने ऊपर तुम लिए जा रहे हो और फिर तुम डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हो वो चीज, तो उस पर बात करो उनसे कि ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से हल करें. तो बस ये बात होती है, आपको बात करनी पड़ती है.
और समझाना पड़ता है, वो ज़्यादा बेहतर है. So lastly, anything that you want to tell people as a psychologist, आपको क्या लगता है कि people get come to terms with कि they need psychologists in their lives, या आपके ज़हन में what is psychology for people out there who are listening? इसको नहीं बुलाइएगा. Yeah, as the CEO of Calm Planet, हाँ. how do we stay Just kidding. calm in a world where there's so much anxiety? Calm कैसे रहें? Have healthy habits, be surrounded by loved ones. Don't take anything for granted. Life is too short. Don't take anything for granted. Really make a habit of maintaining a gratitude diary. No matter in whatever place you are in life, like get up and write down the things that you're truly, truly grateful for. Cherish small moments. Literally, cherish the cup of tea, cherish the garden outside, cherish anything and everything. अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, अपने लव्ड वंस के ऊपर टाइम भी इन्वेस्ट करें और उनको समझने की कोशिश करें डीपली डीपली। और दूसरी चीज़ ये कि हर इंसान को ज़रूरी नहीं है हर इंसान को साइकोलॉजिस्ट चाहिए हो, बट हर इंसान को सेल्फ असेसमेंट की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ कैथार्सिस की। और अपने इससे पहले कि आप अपने लव्ड वंस पे उँगली उठाएँ, अपने बॉस पे उँगली उठाएँ, थोड़ा इनर कैथार्सिस करें, इनर रिफ्लेक्शन करें कि व्हाट इज़ व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दिस दैट आई एम गोइंग थ्रू? इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन करेक्ट हियर बिफोर लाइक आई जंप ऑन टू से कि इसकी वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है। ऑल्सो आई थिंक कि एक फिलोसफिकल नोट पे एंड करते हैं इसको कि जो आपकी रियलिटी है वो आपकी परसेप्शन है एंड यू हैव द पावर टू ऑल्टर दैट। वेल सेड, बिल्कुल यही बात है. सो आई होप जो आज हमारी पॉडकास्ट देखे थे उनको मज़ा आया होगा, एंड आई थिंक इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू लुक एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी. जनरली हम वो ये कि आप पागल हैं और आपको साइकोलॉजिस्ट पे जाना चाहिए कि एक टर्म यूज़ होती है, बट देन लाइक वी रिलेशनशिप में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके नॉर्मल हालात में, आपके इवन विद फ्रेंड्स एंड विद फैमिली, आपको किस तरह से डील करना है. तो बेसिकली इट अलाउज एंड इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन कि कैसे करनी है, आपको सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है. तो इफ़ people think that they need help, they should definitely opt and go to a psychologist and come go once, like you said. And apna lastly, just do you want to talk about your company, Calm Planet के बारे में कुछ बताना चाहिए? If people want to reach out, how do they do Sure. that? So the Calm Planet work with people who have mental illness, but even physical illnesses, because every illness has a mental component as well. So I personally work with people who have chronic illnesses as well, and they need help. For example, if you have hypertension and you're taking 3 medications, and probably you need therapy, and that would actually help you, taper down those medications. Same for like जब हम mental illnesses की बात करते हैं, we cater for anxiety, depression, relationship issues, and you name it, bipolar disorder, everything as well, personality disorders as well. Apart from that, Calm Planet also offers employee well-being services to different corporates, and we work on behavioral change and implementing healthy behaviors for healthy employees. Nice. Badass. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, and we would definitely want to have you again on different subject. हमने बहुत सारे subjects से बात की, we brushed through everything. Yes. Tell us how to deal with men. Next time. So thank you everyone for watching. This was Unboxing Success. See you later.